Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Science of Life with Dr. Mohammed Yusuf. Today we are going to continue the discussion of cardiac output. But before that, one ayah from Holy Quran. I have selected an ayah from Surah Al-Furqan, ayah number 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे क़यामत वाले दिन का मंजर है कि उस दिन रसूल अल्लाह से कहेंगे या रब्बे ऐ मेरे रब इन कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, मेरी इस कौम ने इस कुरान को पीठ पीछे डाल दिया था, यानी कुरान पाक के अहकामात की परवाह करनी छोड़ दी थी, कुरान को छोड़ दिया था। और फिर अब ये जब रसूल अपनी उम्मत के लिए, अपनी कौम के लिए ये अल्फाज कह रहे हो तो ये हम तो शफात की उम्मीद लिए बैठे हुए हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफात करेंगे तो हम हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत होगी या जन्नत मिलेगी या दोज़ख से बचेंगे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस्तिग़ासा कर रहे हो तो फिर शफात क्या करेंगे? तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं शफात के लिए भी प्री रिक्विजिट्स हैं। शफात तो उनके लिए जिनसे गुनाह गलती से हो जाएं और वो फिर अल्लाह पाक उनको माफ़ करता है, गलती हो जाए। ये जो कुरान को हम पीठ पीछे फेंक के ज़िंदगी गुजारते रहें और शफात की उम्मीद रखें तो इस पर तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तिग़ासा होगा कि कहेंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को पछे पुश डाल दिया था। अब ये तो दावा दायर कर रहे हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश नहीं कर रहे। तो कुरान को छोड़ने का नतीजा फिर हम सोच लें कि क़यामत वाले दिन हमारे साथ क्या होने। तो अल्लाह पाक हमें इस बात की समझ दे कि हम कुरान पे अल्लाह के अहकामात को लेके चलें, उन पे अमल करके चलें। फिर गुनाह हो जाएंगे तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश भी और मग़फ़िरत भी और तौबा भी सब कुछ तब होगा जब हम कुरान के पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे। गलती हो जाए तो उसका तौबा है। अल्लाह पाक इस बात की समझ दे कि कुरान हमारे लिए लाएअमल है, उसके पर हमने ज़िंदगी गुजारनी। So we are going to discuss cardiac output. We discussed many things in the previous lecture. Cardiac output. These are the curves. The cardiac output curve. We had plotted this green curve is the normal cardiac output curve, normal resting conditions cardiac output curve. When this is at 0 millimeter of mercury, normal right atrial pressure, the cardiac output is 5 liter. It will be 5 liter. Cardiac output is 5 liter. And when venous, this is right atrial pressure, is because of the venous return, normal venous return, returning to the right atrium, it is normal central venous pressure or right atrial pressure is 0 millimeter of mercury. This is normal right atrial pressure. If the venous return increases, then definitely right atrial pressure is going to increase. If there is increased venous return, then the cardiac output is going to increase. If there is more venous return, more right atrial pressure, cardiac output is going to increase, and at 4 millimeter of mercury, it has gone to about 13 liters. So this is green curve is the normal Frank-Starling's mechanism to increase the cardiac output according to increased venous return. So this is the simply inherent properties of cardiac muscle we had discussed. This blue curve or the other curve, this is a hyper effective heart. When heart becomes more powerful pump because of, say, the sympathetic system, stimulation of the sympathetic system causes this much, that is at 0 millimeter of mercury, the cardiac output may be, if you draw a curve, it may be 10 liter, 12 liter. At 4 millimeter of mercury, it will go to 25 liter. So sympathetic stimulation increases the cardiac output. And opposite, if there is sympathetic inhibition or parasympathetic stimulation, then the cardiac output curve will be shifted downward. So these normal curves we discussed in the previous lecture. Now we are
putting some more changes in this. We will observe the more changes, effects of some other factors on the cardiac output curves. Effect of external pressure on the cardiac output. Our heart is in the thoracic cage. Normal intrapleural pressure in the thoracic cage is -4 millimeter of mercury. In this state, normal intrapleural pressure or pressure around the heart, you can say, in the chest cavity is -4 millimeter of mercury. And at this 0 millimeter of mercury pressure is required for the normal cardiac output or for the normal venous return. If this pressure increases, that is, pressure around the heart has increased, -4, it is if it is -2 or 0 or +1, that is increased pressure around the heart in the thoracic cage, the right atrial pressure has to increase if it is to be filled. If the pressure inside the remains 0 in the right atrium and the pressure outside is 0, again 0, the proper filling will not take place. At -4 millimeter of pressure around the heart, normal filling at 0 millimeter of mercury is 5 liters per minute. If the pressure around the heart increases, then the right atrial pressure has to increase for the proper filling of the heart. So the changes in the pressure shift the cardiac output curve to the same magnitude. If it is increased 2 millimeter of mercury, that is -4 से -2 पे चला जाए. If it is -2 millimeter of mercury, then the right atrial pressure should increase. It should go to +6, +2. And if it becomes 0 millimeter of mercury, right atrial pressure should be +4. So changes from -4 millimeter to +2. कितना change हुआ है? From 4 millimeter to +2, that means 6 millimeter of mercury pressure has increased in the thoracic cage, will shift the cardiac output the same magnitude, 6 millimeter, to higher pressure side. We are going to see the graph that curve in the next diagram, inshallah, next picture. So if the pressure in the intrapleural pressure increases from -4 to +2, that means there is increase of 6 millimeter of mercury, the right atrial pressure should also increase from 0 to +6. So there should be a shifting of the pressure in the right atrial pressure as well. So increase outside pressure requires more right atrial pressure to fill the atrial cardiac chamber. So उनको fill करने के लिए वहाँ pressure ज़्यादा चाहिए होगा. So these are the curves. This is that normal curve. That is -4 millimeter of mercury. This is that normal curve. At 0 millimeter of mercury, you can see the cardiac output is 5 liters. Again, this is normal curve. At normal curve, at 0 millimeter of mercury, the cardiac output is 5 liters. I've drawn these two lines. So if the intrapleural pressure increases from -4 to -2, there is increase of 2 millimeter of mercury pressure. -4 से -2 तक आती हुई कितना pressure increase हुआ? 2 millimeter of mercury. Then it will be 5 liters of the filling will occur. 5 liters of the cardiac output will occur at 2 millimeter of mercury. Between 0 to 4, it will be 2 millimeter of mercury pressure. So right atrial pressure should rise. So 2 millimeter अगर ये increase किया, 2 millimeter, curve is shifted 2 millimeter, and if it is increased to +2, that is 6 millimeter of mercury, then at 6 millimeter of mercury, the pressure cardiac output will be 5 liters. So the effect of external pressure on the cardiac output is that if the external pressure increases, right atrial pressure will increase for the proper filling and proper cardiac output. So right atrial pressure will increase to the same magnitude jitna external pressure has increased or intrapleural pressure has increased. Changes in the intrapleural pressure, for example, simple normal
breathing, inspiration and expiration, that increases or decreases the pressure +2 or -2 millimeter of mercury during normal breathing. If it is +2, cardiac output will give. That is, if we are inspiring, during inspiration is -4 millimeter of mercury, pressure becomes more negative. Inspiration creates more negative pressure for the filling of the lungs. So more negative pressure will shift the curve toward the left side. And the more pressure as happens when we are expiring, when the pressure inside the this is +2, that is -4 से -2 हो जाएगा. So the cardiac output, right atrial pressure should also increase. So breathing against the negative pressure will decrease the right atrial pressure. What is that negative pressure? Valsalva manure. If I close my nostril, if I want to inspire forcefully, I am creating a more negative pressure. And when I close, more negative pressure will reduce the right atrial pressure, and positive pressure will increase the right atrial pressure. Breathing against the positive pressure will increase the. That is, if I close the and I create the positive pressure, I exert more to expire on this closed nostrils and oral mouth as well. There will be more pressure in the so it will increase the right atrial pressure. So right atrial pressure is adjusted according to the intrapleural pressure. For example, if there is opening of the thoracic cage, if some accident occurs, injury occurs, and thoracic cage is open, what will be the pressure in the thoracic cage? It will be 0. 0 means atmospheric pressure. 0 pressure means atmospheric pressure. We are referred this 0 plus -4 or -2 with referred to atmospheric pressure. हम बात कर रहे हैं. So when this chest cavity is open, the thoracic cage pressure will be 0 millimeter of mercury. So opening of the thoracic cage will increase the thoracic cage pressure. It will be 0 millimeter of mercury. Right atrial pressure should increase. It should increase 4. वो 4 इंक्रीज करना चाहिए. इट हैज इंक्रीज. ये भी 4 बढ़ गया ना, -4 से 0 हुआ है. दैट मीन्स 4 millimeter इंक्रीज प्रेशर हैज अकर्ड. तो राइट एट्रियल प्रेशर विल आल्सो इंक्रीज फ्रॉम 0 to 4 millimeter of mercury. So cardiac tamponade, another condition. What is cardiac tamponade? If fluid collects in the pericardial space, you know, the heart is covered by the pericardium, visceral layer of the pericardium, and then the parietal layer of pericardium. In between, there is a fluid which is known as pericardial fluid, that is responsible for the lubrication for the contraction of the heart. If that fluid increases, there is more filling. Extra fluid is filled in the pericardial space. That is known as cardiac tamponade, fluid in the pericardium. What is that? That will increase the pressure around the heart. So that will hinder the expansion of the heart. So there must be increase in the pressure around the heart. There is increased pressure around the heart. So this will shift to the right. That means higher pressure side, right atrial pressure will increase for the proper filling and for the proper cardiac output. This is generally, that is, the changes in the intrapleural pressure generally shift the cardiac output curve in proportion to the pressure changes for breathing, Valsalva maneuver, abhi humne discuss kiya hai. And cardiac tamponade also filling of the pericardial sac with fluid, lower rate of the change of the cardiac output with right atrial pressure, wahi baat hogi. That is, this is heart. If the pressure around there is fluid around the heart, there will be more pressure on the heart. This is heart chamber. Then the filling of the heart will be difficult. So it will need more pressure for this proper filling and proper cardiac output. So cardiac output curves. These are the normal cardiac output curves. Normal cardiac output curve. If the pressure, intrapleural pressure increases, then the cardiac output curve will be shifted to higher pressure sites. And if the intrapleural pressure increases, they will be shifted, decreases, if they will be shifted to lower pressure side. We are going combination of these slides. So this is normal curve.
That is, at 0 millimeter of mercury, it is normal curve. Red curve is the normal cardiac output curve. At 0 millimeter of mercury, there is the 5 liters of the cardiac output. And at 4 millimeter of mercury, it is the 13 liters. ये पहले भी हमने discuss किया हुआ है. Now this curve, when the hyper-effective heart, if we stimulate the sympathetic system, that will create hyper-effectiveness, pumping force. But if at the same time, if there is increased intrapleural pressure due to any reason, if there is increased intrapleural pressure, this will shift this curve to higher pressure sides, and the hyper-effectiveness sympathetic stimulation will cause the upward movement of the curve. So curve will be shifted upward and to the upper side if the condition is hyper-effectiveness, sympathetic stimulation, and increased intrapleural pressure due to any reason. And opposite, this is opposite, that is hypoeffective heart, and the intrapleural pressure is shifted to the lower pressure side. ये कम किया तो it has shifted to right and to the lower side. So these are the combination of the cardiac output curves when the intrapleural pressure changes and when the pumping effectiveness of the heart also changes. The factors affecting the venous return. Now this is again very important. Venous return is responsible, it determines the cardiac output. If the venous return increases or decreases, cardiac output will increase or decrease accordingly. Because the Frank-Starling's law says heart is capable of pumping all the venous return. That is, cardiac output is always equal to venous return. Any factor which affects the venous return will affect the cardiac output. So what are the factors which can affect the venous return? Number one, right atrial pressure, 0 millimeter of mercury. If the right atrial pressure is 0 millimeter of mercury, and the mean systemic filling pressure, this is again pressure, we are going to define it. ये है क्या? अभी हम बात करते हैं. Mean systemic filling pressure. These are two very important factors which will determine the venous return. Now imagine, right atrial pressure is 0 millimeter of mercury, and the venous veins are emptying into this central venous pressure. If the right atrial pressure becomes 1 millimeter of mercury, what will happen to venous return? Venous return should be reduced. So venous return is reduced if the right atrial pressure has increased due to any reason. For example, cardiac failure. When the cardiac failure, heart cannot pump the blood properly, then the venous pressure, the central venous pressure, that is right atrial pressure, is going to increase. अगर right ventricle proper pump नहीं कर रहा, blood कहाँ जाएगा? It will remain in the chamber, in the right ventricle, in the right atrium. So right atrial pressure will increase and the venous return should reduce. Number one. So इसका effect तो हमें नजर आ रहा है. अभी मैं explain करता हूँ. Second, mean systemic filling pressure. It is, इसको डिफाइन कैसे करें? इफ यू स्टॉप द हार्ट, इमेजिन करें, इफ यू स्टॉप द हार्ट, द प्रेशर इन होल ऑफ द vascular system will be equal. Normal contraction of the heart is creating systolic pressure and diastolic pressure during diastole. If there is no pumping activity, pressure in whole of the systemic vessels or all the blood vessels will be equal. It will be equal. It will be because of only volume of the blood. Volume, if it is 5 liters, certain pressure will be there. If the volume is more, pressure will be more. If the volume is less, that pressure will. That imaginary pressure is the mean systemic filling pressure. Volume ने fill करके जो pressure create किया हुआ है, imagine करना पड़ेगा. That is normal तो होता नहीं है. If you stop the heart, the person is dead. But अभी उसको हम एक्सप्लेन करते हैं. So these are the two. So if the filling pressure is more venous return. If the blood volume is 5 liter, there is venous return and cardiac outputs are 5 liter. If the blood volume is 6 liter, then the more venous return will be there. Blood volume जो बढ़ गया है. So it will, the more venous return will be there, more cardiac output will be possible. So these are the two very important factors which will affect the venous return. And then the third one is the resistance to the blood flow. Vessel key, state of vessels, venous resistance. If the veins are dilated,
the flow will be reduced. If they are constricted, blood will be easily coming to the heart. If the उनका capacitance बढ़ जाए, blood will be pooling in the veins. अगर उनका resistance, if their resistance is more, if the venous resistance is more, then the flow will be reduced. So resistant to the blood flow. If resistant blood flow को रोक रहे हैं, resistant रुकावट को कहते हैं ना, तो the blood flow will be reduced, venous return will be reduced. So these are the three factors. So right atrial pressure, higher pressure impedes the venous return. I have explained it. If 0 millimeter के बजाय 1 millimeter हो जाए, 2 millimeter हो जाए, it will be difficult for the venous veins to empty into higher pressure side. So the higher pressure impedes the venous return. जैसे मैंने example दी, cardiac failure. It will increase, the blood will be pooling in the veins. So higher pressure in the right atrium will impede the venous return, and venous return becomes zero at only 7 millimeter of mercury. इसको अभी हम explain करेंगे. If the right atrial pressure is 0 millimeter of mercury, per minute venous return is 5 liter. If it is 1 millimeter of mercury, it will be reduced. If 2 millimeter of mercury, the venous return will be reduced. At 7 millimeter of mercury, return is not possible. After that, it will be zero. Venous return becomes zero. That is, heart will stop pumping. Pumping activity will be lost. So at 7 millimeter of mercury. Mean systemic filling pressure, higher pressure increases the venous return, and आगे अगली slide पे we are going to explain. This depends upon the blood volume. This depends upon the vascular capacity. इसको mean systemic filling pressure, वो जो imaginary pressure मैंने अभी explain किया था. And resistant to the blood flow, अगर resistant to the blood flow is increased, that should impede the venous return. इसको हम explain करते हैं. Venous return. Now we are going to plot. ये अभी दोबारा वापस जाके देखते हैं. This venous return becomes zero at 7 millimeter of mercury. At 0 millimeter of mercury, venous return कितना है? 5 liter per minute. 5 liter per minute. If the right atrial pressure increases 1, 2, 3, venous return will be reduced, and at 0 millimeter of mercury, it will become, at 7 millimeter of mercury right atrial pressure, it will become zero. Ab we are going to plot venous return against right atrial pressure. पहले जो हमने कर्व देखी थी, these are the curves जो हमने पहले देखी थी, ये कर्व, these are the curves. We have plotted the right atrial pressure के against हमने cardiac output plot किया था. Now we are going to plot against this right atrial pressure. Right atrial pressure अगर 0 है, cardiac venous return should be 5. वो भी 5 होना चाहिए. एंड अगर 4 पे क्या होगा और 6 पे क्या होगा, 7 पे वो 0 हो जाता है. अभी हम एक्सप्लेन करते हैं. सो वीनस रिटर्न कर्व वी आर प्लॉटिंग, क्या प्लॉट कर रहे हैं? अगेंस्ट राइट एट्रियल प्रेशर. राइट एट्रियल प्रेशर के अगेंस्ट वी आर प्लॉटिंग द वीनस रिटर्न, एंड एट 0 millimeter of mercury, 0 millimeter of mercury पे right atrial pressure पे right 0 millimeter of mercury, it is 5 liters. ऐसे ही है, it should be at 0 millimeter of mercury venous return is 5 liter. Cardiac output is also 5 liter. हमने पहले डिस्कस किया हुआ है. Cardiac output at 0 millimeter of mercury is 5 liter. फ्रैंक स्टार्निंग लॉ क्या कहते हैं? venous return 5 liter, cardiac output will be 5 liter. So at 0 millimeter of mercury, venous return is 5 liter. So cardiac output is also 5 liter at 0 millimeter of mercury. Now, if this venous pressure becomes 2 millimeter of mercury, it will be somewhere here. And it becomes 4 millimeter of mercury, it will be somewhere here. At 6 millimeter, at 7 millimeter. So venous return with increasing venous return. With increasing right atrial pressure, venous return is being reduced. वो भी कम हो रहा है, and at 7 millimeter of mercury, it becomes 0. So no pumping activity is there. 0. No venous return, no cardiac output. So this is, and before that, if the right atrial pressure is less, 0 के बजाय it is -1, some rise in the
venous return is there, transitional zone में लिखा हुआ है, some rise and up to -4 millimeter of mercury may be some rise in the right atrial pressure, fall in the right atrial pressure may increase the venous return. 0 से अगर +1 करने से venous return is reduced. If we reduce the from 0 to -1, there should be some rise in the right atrial the venous return. Yes, it increases, but very little increase as compared to fall. उस तरफ देखें तो decreasing right atrial pressure in this up to -4 millimeter of mercury, there is some rise increase in the venous return, or beyond that -4 से अगर भी कम करें -6, -7, -8, whatever, -8 पे there is no further increase in the venous return. Why? Because very low pressure in the right atrium causes collapse of the veins. Very low pressure, ये vein आ रही है into the right atrium. If it is very low pressure, it will suck the blood out of these veins and it will cause the no further increase. So very negative pressure causes collapse of the all the bigger veins. कौन से हैं? Inferior and superior vena cava. They will collapse and there will be no further increase in the venous return is possible if there is very low right atrial pressure. Very low right atrial pressure पे veins collapse कर जाते हैं, तो further increase is not possible. So this is the venous return curve, and this 7 millimeter of mercury pressure at 0 millimeter of mercury pressure at 7 millimeter is known as mean systemic filling pressure. ये कब होगा? When heart is not pumping. It is not receiving. This pressure is inside the veins. Veins में, right atrium में, left atrium में, aorta में, vena cava में, throughout the, there is no pumping. Pump तो हो ही नहीं रहा. So pressure throughout the vascular system is 7 millimeter of mercury. That's why this is known as mean systemic filling pressure. This pressure is due to the filling of this vascular system with this much volume. अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा दिस विल गो अगेन. आगे हम देखते हैं. इफ यू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इट विल गो बियॉन्ड 7. ये 7 से भी आगे जाएगा. वी आर गोइंग टू mean systemic filling pressure, this 7 millimeter of mercury. At 7 millimeter of mercury plus 7 millimeter of mercury, venous return is 0. If the right atrial becomes 0, the plus 7 millimeter of mercury, there is no further venous return, so there is no cardiac output. Pumping activity has been stopped. There is no pumping activity. So what will happen? Throughout the venous, throughout the vascular system, the pressure will be plus 7 millimeter of mercury. Because of the filling of this 5 to 6 liters of blood जो बंदे में मौजूद है, उसने filling effect की वजह से वो pressure है. Hydrostatic pressure है. Simply आपके. So cardiac output is also 0. When there is no venous return, there is no cardiac output. Cardiac output is always equal to venous return. जब वो 0 हो गया, cardiac output is also 0. At such stage, the pressure in all the circulatory components is plus 7. The same 7 millimeter of mercury pressure in the veins, 7 millimeter of mercury pressure in the aorta, जो 100 होता है. लेकिन अब ये स्टॉप हो गया. There is no forcing of the blood into the aorta. It is simply filling of the equilibrium पे हो गया pressure throughout the vascular system. So all the circulatory component, it is 7 millimeter of mercury. This is known as mean systemic filling pressure या mean circulatory filling pressure. ये इसको कहते हैं पूरे सर्कुलेशन का फिलिंग प्रेशर. अगर सिर्फ सिस्टेमिक वेसल की बात करें वो भी तकरीबन इतना ही है. और होल ऑफ द वास्कुलर सिस्टम की बात करें, पल्मोनरी फील्ड को भी शामिल करके उसको मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर 7 मिलीमीटर मरकरी. So very negative pressure below -4 millimeter. ये तो हम कह रहे हैं 7 पे. Very negative pressure in the right atrium. There is no further increase in the venous return because of the collapse of the veins. वो हम discuss करिए आगे. If the very negative pressure below -4 millimeter of mercury does not further increase the venous return because of the collapse of the vessel. Big veins in the thorax are collapsed due to suction by the very negative pressure. -4 से suck कर लेते हैं blood. तो वो वेन्स कोलैप्स हो जाती हैं. सुपीरियर एंड इंफीरियर वेन के भी कोलैप्स हो जाती हैं. तो दोबारा हम उसको जरा इलेबोरेट कर रहे हैं. व्हाट इज मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर? हार्ट स्टॉप बाय शॉक और एनी अदर मीन्स.
अगर हम कर लें एनिमल में, ब्लड फ्लो सीजेस एवरीवेयर and it pressure everywhere becomes equal and this is called the mean circulatory filling pressure. इसी को कहना चाहिए मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर. हार्ट ने पंपिंग एक्टिविटी खत्म कर दी है तो ब्लड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है प्रेशर थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम. इसको हम मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर कहते हैं. होता 7 ही है, वही है मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर के करीब होता है. तो इफ द ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेस, ये जो हमने बात की ना मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर किस वजह से है? इट इज ड्यू टू द फिलिंग ऑफ द ब्लड. whole of the vascular system is filled by this much 5.5 or 6 liters of blood. उसमें fill किया हुआ है. अगर वो volume of the blood increases then that should increase. Now we are going to observe effects of blood volume on the sympathetic system on, ये off नहीं है, this should be on mean circulatory filling pressure. MCFP mean circulatory filling pressure. MSFP कई जगह लिखा होगा mean systemic filling pressure, mean circulatory filling pressure. तो वो दोनों एक ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है mean systemic filling pressure में और mean circulatory filling pressure में. This is normal curve. Red is showing the normal circulatory system. Normal circulatory system में you see normal 5 liters of the blood, mean circulatory filling pressure is 7 millimeter of mercury. अभी हम देख क्या है इसका पे नजर आ रहा है. नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम अबाउट 5 लीटर होता है हमारा ब्लड वॉल्यूम. तो नॉर्मल कर्व पे क्या होता है? देयर इज इट इज द मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर जो है दैट इज 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. पिछली स्लाइडों पे हम एक्सप्लेन करके आ गए. इट इज 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. इफ ब्लड वॉल्यूम इज रिड्यूस 5 लीटर टू 4 लीटर्स, 4 लीटर पे दिस मच विल बी, इट इज ऑलमोस्ट जीरो. मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. देयर विल बी नो फिलिंग. सिर्फ 1 लीटर ब्लड निकालने से 5 लीटर से 4 लीटर पे आए, 4 के करीब आए, देयर इज नो. क्यों? अभी हमने सिंपैथेटिक सिस्टम को रोका हुआ है. सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को हमने रोका हुआ है. कंप्लीट स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन और इनहिबिशन को छोड़ा हुआ है. नॉर्मल सिर्फ वेसल्स की बात करें. सो एट 4 and 6 liter पे it will be further increase, tremendously increase. And if you stimulate the sympathetic system को stimulate करेंगे इसी पर 5 liter पर. If you stimulate the sympathetic system, this is the stimulated sympathetic system, this is the normal sympathetic system. If the sympathetic system is stimulated 5 liter pe, it will be somewhere here. If you touch, draw the line from 5 liter to sympathetic stimulated curve, it will be somewhere here. It will be 14 or 17. Mean systemic filling pressure will be 17 millimeter of mercury. And opposite, if you inhibit the sympathetic system at 5 liter, it will be blue line को यहाँ touch करता है, it will be only 4 or less than 4. So that is the effect of blood volume and sympathetic system on mean circulatory filling pressure. Explain करते हैं इसको आगे. So at 4 liter it will be 0. Sympathetic system को if the 4 liter per, I have got 5 liters of blood. If without sympathetic system, if I 1 liter of blood lose करे आदमी, this mean circulatory filling pressure will be 0. लेकिन I have got the sympathetic system, there will be stimulation of the sympathetic system. So at 4 liter normally sympathetic system maintains at about 5. 5 के करीब mean circulatory filling pressure sympathetic system के साथ maintained रहता है. This is 5, about 5, you can see. And with the sympathetic maximum sympathetic stimulation with the normal 5 liters of blood, it will be 17 millimeter of mercury. Effect of sympathetic nervous system stimulation causes generalized vasoconstriction. Vasoconstriction जब होती है, total vascular capacity is reduced. वो कम हो गई है तो उतना ही वॉल्यूम उसको ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर लेगा. इफ द वास्कुलर कैपेसिटी इज नॉट कम हो गई है तो 5 liters of the blood will give 14 liters. So the total
decrease total capacity of the circulatory system because of the sympathetic stimulation causes mean circulatory filling pressure at each volume of the blood, higher mean circulatory filling pressure at each volume of the blood, and with normal blood volume plus maximum sympathetic stimulation mean circulatory filling pressure will go to 17 millimeter of mercury. ये जो डायग्राम में मैंने यहाँ पे ये this one normal this blood volume with the sympathetic stimulation it will go to 17 millimeter of mercury. ये हमने आगे देखा हुआ है. So at the with the normal ये complete inhibition sorry mean circulatory filling pressure at each volume of the blood will be more, and with the normal blood volume, that means 5 liters, the maximum sympathetic stimulation will cause the mean circulatory filling pressure to 17 millimeter of mercury. 7 के बजाय 17 हो जाएगा. And opposite वो अपोजिट को भी अप्लाई करें. इफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज इनहिबिटेड, दैट ब्लू कर्व जो हमने वहां पे ग्रीन कर्व की बात कर ली, वेदोडाइलेटेशन विल अकर. वेदोडाइलेटेशन जब होगी तो देन द मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर विल फॉल. ब्लड वॉल्यूम तो 5 लीटर है, वास्कुलर कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है, तो इट विल बी 1 लीटर विड्रॉ करने से 0 पे चला जाएगा. लेकिन sympathetic inhibition, the vascular capacity will increase and mean circulatory filling pressure at each level of the blood volume will be low, and the complete inhibition of the sympathetic system at normal blood volume causes mean circulatory filling pressure to only 4 millimeter of mercury. उस डायग्राम पे मैं दिखा के आ गया हूँ. That is slight change in the blood volume or slight change in the vascular capacity. हम sum up कर रहे हैं. अगर blood volume बढ़ेगा, slightly बढ़ेगा, mean circulatory filling pressure will increase. और अगर वो थोड़ा सा कम होगा, दैट विल बी फर्दर रिड्यूस. एंड सिंपैथेटिक सिस्टम की वास्कुलर कैपेसिटी की बात करें, सिंपैथेटिक सिस्टम causes the constriction of the vessels and vascular capacity is increased, and the mean circulatory filling pressure will also increase. And if there is inhibition, it will increase vascular capacity and the mean circulatory filling pressure will also be reduced. So slight change in the blood volume or slight change in the vascular capacity. वास्कुलर कैपेसिटी किस वजह से चेंज होती है? सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन या इनहिबिशन से. तो ब्लड वॉल्यूम तो इंक्रीज डिक्रीज कम है, ब्लीडिंग से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, ऐड करने से, ड्रिप लगाने से ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा. सो स्लाइट चेंज इन द ब्लड वॉल्यूम और स्लाइट चेंज इन द वास्कुलर कैपेसिटी विल कॉज द लार्ज इफेक्ट ऑन मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर. हमने देख लिया लार्ज इफेक्ट देख लिया था. ओनली 1 लीटर ऑफ द ब्लड अगर कम करें ब्लड में से तो इट बिकम 0. लेकिन अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करेंगे वास्कुलर कैपेसिटी को बढ़ा के, इट विल गो टू 5-6. Effect of mean circulatory filling pressure on venous return. Greater the mean circulatory filling pressure, ये तो अब क्लियर हो गया ना. जितना ज्यादा mean circulatory filling pressure होगा, उतना ज्यादा venous return होगा. I have got the 5 liters of the blood. Normal mean circulatory filling pressure is 7 millimeter of mercury. If my blood volume increases, mean circulatory filling pressure will also increase, and it will increase the venous return at the same pressure. So greater the mean circulatory filling pressure, circulatory system is more tightly filled. इसको हम कैसे करें? More tightly filled. Pressure ज्यादा होने का क्या मतलब है? More tightly filled. 7 के बजाय 8, 9, 10. So greater the greater will be the venous return, and increase mean circulatory filling pressure shifts the venous return curve to right and upward. Right and upward. अभी हम देखते हैं right upward का क्या मतलब है. right को तो वो it will touch the not 7 millimeter of mercury baseline को touch करेगी. It will touch at 8, 9, 10 or 17 millimeter of mercury. So the decreased mean circulating filling pressure will cause the venous return curve to be shifted to left and downward. आगे डायग्राम आ रही. So greater the difference between the mean circulatory filling pressure and right. नया statement आ गया है, explain करके आ गए. Greater the difference between the mean circulatory filling pressure and right atrial pressure, greater will be the venous return. क्या मतलब? Normal mean circulatory filling pressure is 7 millimeter of mercury and right atrial pressure is 0 millimeter of mercury. Difference कितना है? 7 का. If the mean circulatory filling pressure becomes
instead of 7 it is 10, 11 or 14 and that is 0. अगर उससे भी कम हो जाए तो further the difference between the right atrial pressure and mean systemic filling pressure जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा venous return होगा. These are the curves. This is normal venous return curve. वही हमने कहा था 7 मिलीमीटर पे ये नॉर्मल पे it will mean circulatory filling pressure 7 होगा तो curve is this. If it is 14, curve will be like that. It has shifted to right and upward. Or if there is inhibition, ये blue curve, that is it has shifted, mean circulatory filling pressure is only half, 3.5. It has shifted to लेफ्ट एंड डाउनवर्ड अपवर्ड वाली नॉर्मल है. तो ये जो वापस जाके फिर इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. इंक्रीज मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर शिफ्ट वीनस रिटर्न कर्व टू राइट एंड अपवर्ड and opposite decrease mean circulatory filling pressure shift the curve to the left and downward. यही बातें होंगी. That is increase mean circulatory filling pressure has shifted the curve. ये normal है, it has been shifted to right side and upward. और अगर ये this is mean circulatory filling pressure कम हो गया, the curve has shifted to from normal to left and downward. ये down हो गया. ये नॉर्मल है और ये उसी जगह पे वो कर्व शिफ्टेड. एंड इफेक्ट ऑफ वीनस रेजिस्टेंस ऑन द वीनस प्रेशर, थोड़ा सा इसको भी देख लें. वेन्स इंक्रीज वीनस रेजिस्टेंस, सीधी सी बात है. इफ द वेन्स का रेजिस्टेंस ज्यादा हो, रेजिस्टेंस के वेन्स का तो रेजिस्टेंस वेसल नहीं है ना, लेकिन कहीं से हम वेन को पकड़ने हैं बाहर से, रेजिस्टेंस बढ़ा दें तो वीनस रिटर्न कम हो जाएगा. तो इंक्रीज वीनस रेजिस्टेंस, जैसे हमने वो रिब के ऊपर से, फर्स्ट रिब के ऊपर से जो वेन कोलैप्स हो रही थी, रेजिस्टेंस बढ़ रहा था. तो इंक्रीज वीनस रेजिस्टेंस शुड इंक्रीज द रिड्यूस द वीनस रिटर्न. ब्लड पूल्स इन द वेन्स, जब रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो वेन्स में ब्लड खड़ा हो जाएगा. एनी सिग्निफिकेंट राइज इन द प्रेशर will cause the compliance. वो जो वहां पे rise in the pressure है, veins are the compliant, वो blood को accommodate कर लेंगी. अगर resistance ज्यादा, blood उधर खड़ा हो जाएगा, venous return कम हो जाएगा. and अगर arteriolar resistance बढ़ जाए, वो pressure side वाले, arterial side वाले, if there is arteriolar resistance, there is increased pressure, and increase this pressure overcomes the resistance and venous return is not reduced. वेन साइड पे अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाए तो वीनस रिटर्न कम होता है, लेकिन अगर आर्टीरियल साइड पे, आर्ट्रियोलर साइड पे अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, दैट इंक्रीजेस द प्रेशर, तो उससे ब्लड फ्लो नहीं कम, इंक्रीज प्रेशर कॉजेस मोर फ्लो. So it overcomes, resistance is overcome by the more pressure and venous return is not reduced. Venous curve is shifted upward without any change in the mean circulatory filling pressure. इसमें क्या होगा, if the उस साइड पे प्रेशर अगर बढ़ता है, the curve will be shifted, venous return curve will be shifted upward without any change in the mean circulatory filling pressure. आगे डायग्राम में देख लें. This is if the resistance is the effect of venous resistance on the venous return curve. That is if venous resistance half हो गया, नॉर्मल ये है. If the venous resistance has halved, mean circulatory filling pressure तो उतना ही है, but it has shifted to upward. If the venous resistance is doubled, ये normal है, this is 2 times more resistance है. Curve mean circulatory filling pressure तो उतना ही है, but the curve has shifted to lower pressure side. ये पिछली diagram में जो explain किया. 0 millimeter of mercury पे normally it is the venous return is 5 liter, लेकिन if the resistance is less it will be ये यहाँ पे कहाँ टच कर रहा है, about 10 liters. ये 10 liter होगा. और if the resistance in the veins is increased due to any reason, then at a 0 millimeter of mercury it will be only the mean circulatory filling pressure. It will be only mean circulatory filling pressure तो इस green card पे भी उतना ही है, but the venous return will be only 4 liters, 3 liters. कार्डिक आउटपुट एंड वीनस रिटर्न कर्व इन डिफरेंट कंडीशन. ये इन दोनों किस्म की वीनस रिटर्न कर्व्स नॉर्मल एंड एबनॉर्मल एंड कार्डिक आउटपुट कर्व्स नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, दोनों को जमा कर दिया है. नॉर्मल कर्व्स को आपको याद है, नॉर्मल वीनस रिटर्न कर्व इज दिस वन,
This is the normal venous return curve and this is the normal cardiac output curve. Equilibrium point उनका देख लें at 0 millimeter of mercury. Normal venous return is 5 liter. Normal cardiac output is also 5 liters. और अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कर दिया आपने इसमें तो दैट विल कॉज एट 0 millimeter of mercury इट विल बी 11 liters और वीनस रिटर्न इज आल्सो 11 liters. ये भी वीनस रिटर्न की कर्व है. तो ये उन कर्व्स की कॉम्बिनेशन है. वीनस रिटर्न कर्व ये वाली है एंड कार्डियक आउटपुट कर्व ये वाली है. अब आखिरी ये दो स्लाइड्स हैं, इनको देख लें. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन an idea to how we can measure cardiac output. अभी तक तो हम बोल रहे हैं cardiac output 5 लीटर. measure कैसे करेंगे? measurement of cardiac output एक बहुत आसान सा मेथड है which is known as oxygen fix method. आपकी किताब के आखिर में लिखा हुआ है, मैं एक्सप्लेन कर गाइडन में लिखा हुआ है. What is that? requirement उसमें दो तीन चीजें चाहिए. One, arterial oxygen concentration. आर्टरीज की ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो एआर्टा में ब्लड आ रहा है, जो आर्टीरियल ब्लड है, कितनी ऑक्सीजन है उसको एक तो हमें ये पता. राइट एट्रियल की ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, वीनस ब्लड की ऑक्सीजन कितनी है. राइट एट्रियम में हम डालें दैट ब्लड जो लंग्स को जा रहा है उसकी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितनी है. और आर्टीरियल ब्लड कौन सा होता है? जो लंग से वापस आया है, वो ऑक्सीजन लेके आया है. कितना ब्लड, उसके ऑक्सीजन कंसंट्रेशन दो ब्लड में. आर्टीरियल ब्लड में जो ऑक्सीजन लेके आया लंग से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, एंड द ब्लड विच इज गोइंग फ्रॉम द राइट एट्रियम इनटू द लंग्स, यानी राइट एट्रियम में ब्लड की ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, राइट एट्रियल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, हम उस ब्लड की ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पर लीटर मेजर कर लें. ये दो बातें मेजर करें. And the volume of total oxygen absorbed per minute by from the lungs. Lungs को हम उस बंदे को ऑक्सीजन देते हैं, हम देखते हैं कि कितनी ऑक्सीजन, हाउ मच ऑक्सीजन दिस पर्सन हैज absorbed by this blood in 1 minute. That will be cardiac output. उसको देखें, एक्सप्लेन करें. Cardiac output will be equal to oxygen absorbed per minute. Per minute ऑक्सीजन कितने ब्लड ने एब्जॉर्ब की होगी. 1 मिनट में जितना ब्लड लंग में से गुजरा होगा, दैट विल बी कार्डियक आउटपुट. व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? ब्लड पंप बाय द लंग्स, बाय द वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, जितना भी हो, द ब्लड पंप इनटू द लंग्स पर मिनट विल बी कार्डियक आउटपुट. सो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब बाय दिस ब्लड, एवी कंसंट्रेशन, ये डायग्राम में देखें. That is, if the concentration in the right atrial blood is 160 ml per liter, right atrial blood में, इसको हमने लंग्स में भेजा है और 1 मिनट जो ब्लड वहां से निकल रहा है दैट इज 200 ml पर मिनट. तो कितनी ऑक्सीजन बढ़ गई है पर लिटर? 40. 160 से 40 पर लिटर बढ़ गई है. लेकिन अगर हम उसी वक्त मेजर कर रहे हो कि ऑक्सीजन कंज्यूम कितनी हुई है, अगर वो 200 हुई है तो 200 divided by this 40 will be 5 liters. That is very easy method. If you measure the oxygen concentration in the blood going to the lungs and oxygen concentration coming out of the lungs, दोनों अगर उनका फर्क 40 है और पर मिनट ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है अबाउट 200 ml, तो 200 divided by 4, this is 40, this will give us a 5 liter of cardiac output. So this is oxygen fix method of the measurement of the cardiac output. Very simple method है, आसानी से हम कर सकते हैं. So that's how cardiac output के मुतालिक हम लेक्चर हमारा आज ख़त्म होता है इंशाल्लाह ताला. नेक्स्ट टाइम हम कुछ रीजनल सर्कुलेशन की बात करेंगे, मसल ब्लड फ्लो की नेक्स्ट टाइम बात करूंगा, फिर कार्नरी ब्लड फ्लो भी डिस्कस करूंगा. नेक्स्ट वीडियो विल बी फिजियोलॉजी ऑफ द मसल ब्लड फ्लो इंशाल्लाह ताला. So hope you are following me. Thank you very much. If you have got some questions, you can ask in the comment section. And I always request you to subscribe and share my videos so that maximum people can benefit from it. And this will be Sadqa Jariya for me. And if you share to rest of the community and students, it will be Sadqa Jariya for you as well. Thank you very much.